बंगाली लड़का बिजनेस तो कर ही नहीं सकता. Coming to sales, annual turnover is close to 300 crores as of now. I was 47 years old and everybody said कि इस उम्र में तो यार नौकरी छोड़ के अच्छा पेइंग जॉब के छोड़ के कहा तू एंटरप्रेन्योर बनेगा. सबने मुझे बोला यार बेवकूफ़ी है, तो हो नहीं सकता. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय डॉटर, पापा मैं स्कूल का फीस तो पे हो जाएगा ना. India, a land of flavors where every corner whispers a unique culinary tale. In this vast tapestry of tastes, one dish reigns supreme, biryani. A symphony of rice, meat and spices. It's more than just food, it's a cultural obsession. But beyond the tantalizing aroma and rich flavors lies a story of ambition, innovation and entrepreneurial spirit. I am the founder and CEO of Biryani by Kilo. We founded Biryani by Kilo 9 years back. Prior to that, I've been always in the corporate world. So I've done a job all my life and never thought I'll become an entrepreneur. It needs a lot of guts to do that. Two friends, bound by a shared passion for food and a desire to disrupt the culinary landscape, embarked on a mission. Kaushik Roy and Vishal Jindal, driven by a dream of bringing authentic biryani to every doorstep, laid the foundation for Biryani by Kilo in the year 2015. I was 47 years old and everybody said कि इस उम्र में तो यार नौकरी छोड़ के अच्छा पेइंग जॉब के छोड़ के कहा तू एंटरप्रेन्योर बनेगा. So I think everybody said don't do this. I think you will screw up your life completely at this old age. You have a family to take care of. But I think the conviction was so strong that there's something that I've cracked right, and nobody is obviously doing what I was intending to do at that point of time. So I quit my job. It was a well-paying job, and I still miss those corporate days, the luxury of being in a corporate world. But I think this has its own share of challenges and fun that I'm enjoying every bit of it. With unwavering determination, they set out to recreate the magic of a traditional biryani kitchen. From sourcing the finest ingredients to mastering the art of slow cooking, every step was a labor of love. Their vision was clear: to deliver biryani that was not only delicious, but also a celebration of flavors. The biggest thing when you quit a job after I worked for close to over 22, 23 years in a corporate world, and the first thing on the morning when I don't get an SMS for my salary, that takes a while to get absorbed into the system कि your salary नहीं आ रही अब तो. Every first of the month you would probably get your salary SMS. So that did not come. So I think that was the biggest thing, and that was the worry for the family. A dream fueled by a deep-rooted passion for food. But turning that dream into a reality is rarely a smooth journey. Balancing family expectations, overcoming financial hurdles. So I have worked with a lot of entrepreneurs in the past when I was in my corporate job. So I've seen the pain an entrepreneur goes through, and I've helped them to scale up businesses, give them all the support required. So I've known that this pain will come one day eventually. So what I prepared for it very mentally. I was prepared for it, but also I made my situation such that I can't go back to a job. So I sold everything I had. I sold my house, my car, everything. Gave up all luxuries. मैंने कहा सारा पैसा business पे लगा दो. Because if you have a backup plan, then you always have that in mind कि कुछ नहीं हुआ I can always go back for a job. And I realized that at this age, if I fail in business, nobody will also hire me for a job. बोले तो failure है अपना business में नौकरी क्या करेगा? So I had made a situation for myself that I had to succeed, and I had no other option beyond that. अब तो तुमको नौकरी यही business को successful करना पड़ेगा. Option नहीं तुम्हारे पास कोई. Amidst the hustle and bustle of everyday life, opportunities often hide in plain sight. For Kaushik, the spark for Biryani by Kilo ignited from an unexpected source. A keen observer of the market, he identified a gap, a craving that was yet to be fully satisfied. I was in Bangalore where I had made an investment in a biryani chain. And I saw the way biryani was made in south of India, where people eat biryani for breakfast. The consumption is so high in the south of India that it sells off in an hour's time, so you get a fresh biryani throughout the day. But in north of India, biryani was not there. It was all pulao, which was sold as biryani. They would be tossed in a kadhai with masala and rice and sold as biryani. So I saw this one difference, that north of India does not have the right kind of biryani that is sold in south of India. But unfortunately, the way it was done in the south of India, which was cooked in big digs, will not sell in north of India because you don't have so much of consumption. So the guy who has the first bite of the biryani and the guy who has the last bite of biryani will be probably 6-7 hours apart. So the taste of biryani changes. So I did a lot of research and found out that everybody is making in bigger portions biryani. But the maza of eating the biryani fresh out of the pot when it is given dum cooked is different.
So I started doing a little bit of R&D, see कि is it possible to do in a smaller scale, छोटे हांडियों में. So I realized कि commercial scale में ये कोई नहीं कर रहा, सबने मुझे बोला ये बेवकूफ़ी है, तो हो नहीं सकता है. I think that got on to me. I said this is a big opportunity where nobody is doing a fresh dum cooked biryani, a smaller portion, and we sell by kilo, 1 kilo, half kilo, or all single portion, but they're all fresh cooked in the same handi. So I saw that opportunity, and that is how the idea of biryani in a smaller pot, fresh dum cook came up. Introducing biryani by kilo to the world was just the beginning. The real test lay in capturing hearts and taste buds. The initial response was overwhelming. Customers were drawn to the unique flavors, the convenient packaging, and the brand's promise of authenticity. First day, obviously nothing happened. First order came at 11 o'clock, but the next day, customers started calling me up saying, extra flyer भिजवा देना, मैं पड़ोसियों को दे दूंगा. मैंने यार ये तो कमाल हो गया. So people would call up 5 in the morning and order for biryani. I said सुबह 5 बजे तो मैंने कभी आज तक लंच का नहीं सोचा है. रात को 12 बजे फ़ोन आता है यार मेरे को लंच के लिए चाहिए. Then I had only one outlet in Gurgaon and people from Indrapuram, far out there, metro station तक ला दो, मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ उसको metro station. So I realized there is something good that has happened, and the sales first month to second month was double, third month was 4 times the first month sale. मैंने इतने रेस्टोरेंट खोला, इतना सेल होता तो कभी देखा नहीं मैंने. So there is something that people are appreciating, and I think God has been kind. I was lucky to have taken the jump in the right timing. Timing is very, very important in life. So I think my timing was right. The product was right, the category was right, home delivery concept was right at that point of time. So everything I think fell into place at the right time. मेरा दोस्त बोलता है कि लक्ष्मी बैठी हुई थी जब तुमने सोचा था बिरयानी बाइक लो नाम. The day I registered on GoDaddy, कहते हैं क्या दिमाग में तुम्हारा बैठा हुआ था, तुमने जो रजिस्टर करा लिया, it is doing wonders for you now. With each passing day, Biryani by Kilo's influence grew. What started as a small venture soon transformed into a culinary sensation, expanding its footprint from a single outlet to multiple cities. We started with one outlet in Gurgaon, and today we are over 100 outlets in 45 cities, I think. Yeah, 45 cities. So the interesting part, I think the milestone, first milestone was to get to one dine-in store, which happened much, much later. I think 3 or 4 years later, we opened a first dine-in store in Connaught Place. Which does phenomenally well for us, and the second was in Chandigarh. So it was 3 years after we launched the first delivery outlet. So that was, I think, the first milestone where we started deviating, or rather I would say diversifying from the original format. And currently we have close to 30 dining stores in the country. Recognizing the untapped potential beyond the metros, Biryani by Kilo embarked on an ambitious journey to conquer Tier 2 cities. These emerging hubs offered a unique set of challenges and opportunities. I come from a city called Jamshedpur, very small town, and my team said, "Sir, Jamshedpur पे खोलते हैं." And since I grew up there, I know the city very well. I said, "वहाँ नहीं खोलना, वहाँ पर लोगों का पैसा ही नहीं, खर्चा ही नहीं कर पाते. It is a very small city, and you will not believe it is one of the top grossing outlet for us in Jamshedpur city, and we're planning to open the second one now." So that was, I think, a big surprise for me. And also I was biased with the fact because since I grew up there, I spent all my childhood there. So and obviously I'm ancient, so at that point of time restaurants are not there, delivery were not there, not so many theatres. So when I went back to the city after so many years to launch, it was a different city altogether. So we all have our biases, but that was one great feeling, that very nostalgic when the outlet opened and the sales. I saw the first month sales and I said, you guys have proven me wrong completely, because I was very convinced that we will go wrong in this location, let's not open it here. So that is one thing. So I realized that people have the money, they don't have an opportunity to spend the money, one. Secondly, they also have the time, unlike a Delhi NCR where you don't have the time, then parking is an issue, so delivery picks up does very well. So we realized that in Tier 2 we need to do a dining city, one dining outlet, for the only reason we have to build an emotional connect with the customer. They should be able to come, see the outlet, how the food is prepared, how hygienic we are, what quality of food that we are serving, and then they go back home and order in when they don't want to go out and have a dinner. So there are two things happen. So what, as a standard practice, what we started doing, that any Tier 2 cities, that first outlet that we open a dining outlet. So that is something which is given for us now. So all the cities that I mentioned are mostly Tier 2 cities, and we are there. Secondly, the rentals are in a very realistic, unlike the metros where they're unrealistic rentals. So the P&L looks much better, and people appreciate a good product coming to the city, which they were otherwise restricted to a Domino's or a Pizza Hut, which were the only ones getting into a Tier 2 cities. There were no other Indian players who were a national player getting into Tier 2 cities. So we had the first mover advantage in most of the Tier 2 cities.
We are in small cities like Gorakhpur, which people cannot expect. We are in Meerut, a very, very small city. We are in Ghaziabad, we are in Kanpur, we are in Gwalior, we are in Udaipur, Jodhpur, you name the city and we are there. In Punjab, small cities like Jalandhar, we are there, we do very well. So Tier 2 has played up very well for us, and going forward, all our expansion plan is also around the Tier 2 cities. Metros, we will expand obviously in pockets that we are not there, but more focus on the Tier 2 cities. Competition is the spice of business. The biryani market was no exception. With numerous players vying for a slice of the pie, Biryani by Kilo understood the importance of standing out. This competitive landscape spurred innovation, pushing the brand to continually elevate its offerings and customer experience. तो जितना कंपटीशन हो तो उतना अच्छा हमारे लिए होता है कि पहली बात तो कस्टमर्स को ट्राई करने के लिए मिलता है, प्रोडक्ट बेस बढ़ जाता है और कस्टमर्स आ जाते हैं. सो व्हेन वी ओपन लॉट ऑफ कंपटीशन सॉ अस एंड ओपन नेक्स्ट डोर एंड आवर सेल्स वेंट डाउन एंड आई गॉट वेरी वरीड. मैंने लोगों को और बोला था मैंने जब से वो चले गए नहीं अब वही हाल हो गया. बट इन 3 months टाइम माई सेल्स आफ्टर स्टार्टेड टिकिंग अप ऑल ओवर अगेन. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एग्जांपल दैट व्हेन कंपटीशन कम्स इन पीपल विल मूव अवे फ्रॉम. आपसे हट के चले जाएंगे, वो नया प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, फिर बोलेंगे यार वो बिरयानी बाई किलो का ज़्यादा अच्छा था, वो फ्रेश भी था, लेयर्ड भी था, हांडी में बनता है, पता चलता है, तो आपके पास वापस आ जाता है. सो दिस इज अ लर्निंग दैट आई हैव हैड दैट व्हेन कंपटीशन कम्स इन वी विल गेट अ डेंट. दैट डेंट विल हैपन. पीपल विल go and try out a new product that come in market, but they will end up coming back to you if they really appreciate. So it is very important कि आपको क्वालिटी अपना मेंटेन करना पड़ेगा कम वॉट में, एंड लोगों को प्रोडक्ट में डिफरेंस अपने आप पता चल जाता है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है. हमारा एक एडवांटेज रहा है डे वन से, जो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी द ओनली वंस हु डूइंग इट इन इंडिया. तो जो भी प्लेयर आता है दे आर स्पेसिफिक टू वन काइंड ऑफ बिरयानी. आप साउथ से कोई आएगा तो वो तो थलपट्टी स्टाइल देगा या दिंदुगल स्टाइल देगा, या कोलकाता से आर्सल आया तो कोलकाता स्टाइल बिरयानी है, लखनऊ वाला लखनऊ स्टाइल बिरयानी है, हैदराबादी स्टाइल बिरयानी, तो सब एक ही स्टाइल की बिरयानी. तो वी आर द ओनली वंस इन द कंट्री दैट हैज ऑल द स्टाइल्स ऑफ पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ बिरयानी. तो ये नहीं कि आपको आज साउथ इंडियन स्टाइल बिरयानी खाने का मन कर रहा है तो आपने किसी कंपटीशन से ऑर्डर किया, आज कोलकाता स्टाइल बिरयानी खाया तो आपको किसी और. आप बिरयानी बाई किलो को फ़ोन करेंगे तो हमारे पास कोलकाता भी है, हैदराबादी भी है, लखनऊ है, साउथ का नीलगिरी स्टाइल भी है, या छोटी राइस जो जीरा राइस बोलते हैं वो राइस वाला स्टाइल बिरयानी भी है, अब मालाबार स्टाइल भी हम लॉन्च कर रहे हैं. तो सारे वैरायटी आपको एक ही दुकान में, तो आपके लिए कन्वीनियंट होगी कि आपने एक टाइप का बिरयानी खाना है, आपको फैमिली मेंबर में किसी और टाइप का खाना है, दोनों एक ही जगह से आ जाएगा, आपको 2 दुकान से करने का ऑर्डर नहीं. सो आई थिंक दैट प्लेड इन आवर एडवांटेज and which was there from day one for us. In the world of business, marketing and promotions play a crucial role. However, for Biryani by Kilo, the focus has always been on building a strong brand based on quality and taste. While strategic discounts and promotions have their place, the core belief is in delivering exceptional value that speaks for itself. I am a person who does not believe in discounting too much, and बिरयानी बाई किलो बहुत कम डिस्काउंट देता है. हम रिपीट कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. जिसको ब्रांड अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छा लगता है, वो वापस आता है, वो डिस्काउंट सीकिंग नहीं होता. बट एज आई सेड कि न्यू कस्टमर ट्राई करने के लिए डिस्काउंट भी देना पड़ता है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट पार्ट टू गेट. तो हम वो खर्चे को मार्केटिंग स्पेंड में लेके चलते हैं कि भाई ये डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं ये हमारे मार्केटिंग का खर्चा है. आप उसको डिस्काउंट जैसे नहीं देखते और उसको मार्केटिंग के खर्चे में लेके देखते हैं, पर डिस्काउंट देना पड़ता है टू गेट न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्ड. एक बार कस्टमर ऑन बोर्ड आ जाए उसके बाद उसको डिस्काउंट उतना नहीं देना पड़ता जितना आपने फर्स्ट टाइम में उनको दिया है. तो हमारा डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बने हुए हैं, न्यू और रिपीट के अलग अलग करके बने हुए हैं, ताकि हमारा डिस्काउंट बैलेंस आउट हो जाए. बट लेटली अभी लेटली तो खैर वो फिनोमिनल चेंज हो रहा है कि लोग अब डिस्काउंट्स कम करने लगे, पर बीच में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट का ट्रेंड हो गया था. अब एग्रीगेटर्स ने भी डिस्काउंट्स कम करना शुरू कर दिया है, और तो वो बदल गया अभी पहले से. तो लोगों को भी लगने लगा कि, और मेरा एक फीलिंग है कि जो खाली डिस्काउंट के लिए आपके पास आ रहे हैं शायद वो आपके लिए लॉयल भी नहीं होगा. तो हमारे लिए लॉयल कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिसकी वजह से बिजनेस आज खड़ा हुआ है 9 साल में, वो हमारे लॉयल कस्टमर्स की वजह से खड़ा हुआ है. आप कोई भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में 99 रुपीज़ में भी कोई बिरयानी बेच रहा होगा, पर हम कभी नहीं बेचेंगे वो, भले हमारे पास कस्टमर आए या ना आए, पर मैं 99 रुपीज़ में बिरयानी नहीं बेचूंगा. तो यू आपको एक अपना दायरा सेट करना पड़ेगा कि भैया भाई कहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ तक मेरा बिजनेस मॉडल अफोर्ड कर सकता है. दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट, नॉट कटिंग योरसेल्फ एंड गिविंग डिस्काउंट, बिकॉज देन यू विल नॉट सर्वाइव. आप मार्केट खराब करके निकल जाओगे कुछ दिन में. अगर आपको मार्केट में रहना है तो मॉडल भी काम कराना पड़ेगा, और मॉडल तभी काम करेगा जब आपका पीएनएल में डिस्काउंट बैठता है. तो मैं 99 रुपीज़ में बिरयानी कभी नहीं बेचूंगा. सो आपको पसंद है मेरा खाना, यस मैं आई गिव यू अ डिस्काउंट विच इज फेयर डिस्काउंट टू गिव, बट नॉट टू meet my competition. I don't want that customer on my platform. Marketing is the heartbeat of any successful business.
For Biryani by Kilo, it's about more than just promotions. It's about building a connection with customers. मार्केटिंग में हम दो पार्ट में देखते हैं एक तो हम न्यू और एक रिपीट पे देखते हैं इसका मतलब ये होगा कि जो पहली बार मेरे प्लेटफॉर्म में आ रहा है उसके लिए मुझे पैसा खर्चा करना पड़ता है ब्रांड एम्बेसडर लेना पड़ता है जैसे शिवम दुबे को लिया हमने वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप में वो पहुंच गया तो हमारा विजिबिलिटी बढ़ गया तो कस्टमर ने देखा बिरयानी बाई किलो को ट्राई कर लिया तो वो तो फर्स्ट टाइम कस्टमर है जिसमें पैसा आपको खर्चा करना पड़ता है जिसको हम कैक बोलते हैं या हर एक कस्टमर पे कितना खर्चा कर रहे हैं एड स्पेंड कर रहे हैं एक कस्टमर को आपके प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए वो भले एग्रीगेटर के थ्रू से आया डायरेक्टली आया पर देयर इज अ मनी दैट हैज़ टू बी स्पेंड टू गेट अ कस्टमर ऑन बोर्ड दैट इज़ द न्यू कस्टमर देन द सेकंड वन आपने खाना खाया आपको अच्छा लगा प्रेजेंटेशन ठीक था क्वालिटी ठीक था सर्विस अच्छा था आप दोबारा आ गए डायरेक्टली आ गए वो मेरा रिपीट कस्टमर है तो धंधा चलता तो रिपीट कस्टमर से जो दोबारा आ गया और फ्री का आया पैसा दे के नहीं आया और वो तभी हो सकता है जब आपकी क्वालिटी सर्विस सब कुछ सारे पैरामीटर फिट बैठते हैं कस्टमर का पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया उसके बजट के हिसाब से आता है तब वो रिपीट बनता है और रिपीट से ही बिजनेस आगे बढ़ता है तो हम इस नंबर को बड़ी क्लोजली देखते हैं बिजनेस पे और हमने न्यू और रिपीट के लिए भी अलग अलग प्लान बना रखे हैं रिपीट कि मतलब जो आप वापस आ गए उसके लिए हमने लॉयल्टी पॉइंट्स है अलग अलग कैटेगरी डालते हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कि आप कितना ऑफर हमारे पास से ऑर्डर करते हो और जो न्यू है उसके लिए मार्केटिंग स्पेंड करते हैं तो हर एक रेस्टोरेंट को भी अपना स्पेंड को ऐसी दो पार्ट में देख के देखना चाहिए किसके लिए कितना आप कर रहे हो सो नए मार्केट में तो देखिए पहली बार तो ट्रायल्स कराना पड़ता है सबसे इंपॉर्टेंट है टू गेट बिकॉज पहली बार आया कस्टमर बिरयानी बाई किलो शायद नाम ना सुना हो उस ब्रांड में तो उस टाइम हमें मार्केटिंग थ्रू मीडिया FM और न्यूज़पेपर सब चीज़ को हम सारे बोर्ड्स को यूज़ करते हैं तो दैट एक बार अवेयरनेस बिल्ड हो जाए कि हम आ गए आपके शहर में फिर काफ़ी आजकल इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टायर 2 सिटीज पे स्पेशली तो जितने लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अप्रोच करते तो दे कम एंड ट्राई आवर प्रोडक्ट्स एंड दे लाइक इट एंड दे टॉक अबाउट इट सो दैट इज समथिंग वी डू सो डिजिटल मीडिया पे काफ़ी काम करते हैं आजकल सब डिजिटल पे फोकस ज़्यादा है तो हमारा भी फोकस अब धीरे धीरे डिजिटल पे चल रहा है ट्रेडिशनल मीडिया बहुत कम यूज़ करते हैं तो मोस्टली डिजिटल गूगल इंस्टा फेसबुक इसमें ज़्यादा काम करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स बहुत यूज़ करते हैं फूड ब्लॉगर्स बहुत यूज़ करते हैं जिनको लोग फॉलो करता है एंड एक ऑथेंटिक फीडबैक आया तो कस्टमर्स अपने आप वापस आ जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड उसके बाद तो फिर सेम गेम न्यू एंड रिपीट का हो जाता है वी हैव शारांश गोला मास्टर शेफ का विनर है एंड ही डज दिस लाइव शो जाके खड़े होकर वहाँ पे खाना बनाते हैं हमारे रेस्टोरेंट में आके तो वहाँ पे मतलब लोग पूरे उसको घेर लेते चारों तरफ से कि भाई मतलब जैसे उठा के घर लेके चले जाएंगे उसको कि भाई ये शेफ़ मिल गया हमें तो वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए जब हम कभी सेलिब्रिटी शेफ़ लेके आके कुछ करते हैं तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तो पर अच्छा भी लगता है कि लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं देख के कि आउटलेट लेवल पे इतना इंटरेस्ट बन जाता है बिरयानी ट्रेनिंग सेशन करते हैं बिरयानी बनाना सिखाते हैं रेसिपी शेयर करते हैं हम अपने वो सब करते हैं तो वो सब में काफ़ी इंटरेक्शन होता है कस्टमर से बहुत अच्छा लगता है कस्टमर्स को ये हम जब करते हैं Unlike many successful food brands, Biryani by Kilo has chosen a unique path to growth. Instead of franchising, the company maintains complete ownership of its outlets. This decision stems from a strong commitment to quality control and brand consistency. By directly managing every aspect of the business. So franchising is something Biryani by Kilo does not do first of all. मैंने अपने हाथ बहुत जलाया फ्रेंचाइजिंग करके पिछले अपने जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था काफ़ी 100 फ्रेंचाइजी साइन किए थे और बिजनेस चले तो बहुत अच्छा ना चले तो आपको तो डंडा पड़ता है तो पहला दिन से मेरा ही फिलॉसफी था कि एक ही आउटलेट खोलूँ पर अपने पैसे से खोलूँगा थैंकफुली वी हैड इन्वेस्टर्स सो ऑल आवर आउटलेट्स आर इक्विटी आउटलेट्स अपने ओन अपने ऑपरेटेड आउटलेट है ऑल एम्प्लॉयज ऑन आवर पेरोल वी हैव अ 3000 एम्प्लॉय टीम सो आई थिंक रीज़न आई सेड फ्रेंचाइजिंग नहीं करना चाहते एटलीस्ट इंडिया में बिकॉज एक तो ऑपरेटिंग मॉडल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एवरीबडी इज़ अ ओनर फॉर द आउटलेट वो अपना आपके पीछे क्या कर रहा है जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस डाल दिए पर देयर विल बी सम शॉर्टकट दैट दे विल टेक टू गेट देयर P&L वर्किंग सो वी डोंट डू फ्रेंचाइजिंग इन इंडिया येस इंटरनेशनल वी विल नीड अ फ्रेंचाइजी पार्टनर और अ JV पार्टनर वेयर बिकॉज वी विल नीड अ लॉट ऑफ नो हाउ जो लोकल लाइजनिंग चाहिए तो उसके लिए पार्टनर चाहिए तो इंटरनेशनल जब करेंगे एक सिटी या एक कंट्री के लिए एक पार्टनर लेके करेंगे मल्टीपल फिर भी नहीं करेंगे हम तो ये तो हम डे 1 से क्लियर है मैं फ्रेंचाइजी बहुत हाथ जला चुका हूँ सर तो मैं तो दोबारा ही नहीं कर सकता Numbers don't lie. Biryani by Kilo has consistently witnessed impressive sales growth, a testament to the brand's popularity and the unwavering dedication to quality. From modest beginnings, the company has scaled to serve millions of satisfied customers, making it a formidable force in the Indian food industry. Coming to sales, close to our monthly annual turnover is close to 300 crores as of now. So that is
benchmark that is. So I think getting from 0 to 50 crores was one benchmark. Then we reached to 100, now 300, and now we are aiming to get to 1,000 crores shortly. In another 3 to 4 years time, we should be there. And that is where all our planning are going into now. एक रेस्टोरेंट बिफोर टेकिंग आउट मार्केटिंग कॉस्ट या मेरी सैलरी या अपनी टीम की सैलरी करीब 20% तक स्टोर लेवल पे, जिसको स्टोर एबिटा बोलते हैं हम लोग, स्टोर लेवल का एबिटा बनाता है, जिसमें आपका फूड कॉस्ट आ गया, बिजली हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशंस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, सब कुछ के बाद आपके पास 20% बचता है 100 रुपये में से। और 20% में फिर आपको अपनी सैलरी भी निकालनी होती है, मार्केटिंग का खर्चा भी करना होता है और प्रॉफिट भी बचाना होता है। तो ये मैथ्स मोटा मोटा हर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, मतलब हर रेस्टोरेंट के लिए ये मोटा मोटा सेट बना हुआ है, मतलब। तो दैट इज़ हाउ एवरीबडी वर्क्स ऑन। और AOV हमारा, वी बीन ऑलवेज अ वेरी हाई OV ब्रांड। हम करीब 650-700 रुपये की OV में काम करते हैं। प्रीमियम है, देयर इज़ अ प्राइसिंग भी हल्का सा प्रीमियम है लोगों से। जो मैंने पहले बोला कि डिस्काउंटिंग कम करते हैं, हम डिस्काउंटिंग कम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट का भरोसा ज़्यादा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंग्रेडिएंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए जरा सा मतलब डे 1 से हमारा वो फिलॉसफी रहा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्वालिटी और इसमें कर रहे हैं। एक तो हमें ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों तरह से ग्रो करना पड़ेगा, तो ब्रांड एक्वायर करना एक स्ट्रैटेजी होता है। दूसरा, अभी हमने अपना केटरिंग भी शुरू किया है बिरयानी बाई किलो, क्योंकि किलो में आते हैं लोग, पार्टीज़ के लिए बोलते हैं, तो हमने केटरिंग जज्बा करके अपने बिरयानी बाई किलो का केटरिंग, तो अपने घर में हाउस पार्टी है तो हम अपना सारा इक्विपमेंट, शेफ, स्टाफ सब भेजेंगे, सर्विस, खाना सब कुछ करेंगे। तो एक नया वर्टिकल क्रिएट करें ताकि लोगों की पार्टीज़, एंड बिरयानी इज गोज विद पार्टी, इज अ नेचुरल आई थिंक ब्लेंडिंग दैट हैपन्स। तो वो एक हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिकली आउटलेट खोलना हमारे लिए एक एक्सपेंशन, 45 सिटी में हमें 55 सिटी का आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे होना है, और इन्हीं में और डीप जाएंगे और आउटलेट खोलेंगे। दिल्ली में करीब करीब अभी 24 है, तो दिल्ली में तो बहुत स्कोप है खोलने का, NCR में, बॉम्बे में 11-12 है, बैंगलोर में 12 है। तो इन सिटीज़ पे और डीप जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी खोले हुए। तो आइडिया है कि नेक्स्ट 3-4 साल में हमें इसको 250 आउटलेट करना है, तो दैट इज़ डबल से ज़्यादा, जो अभी हम 100 के आसपास है। तो 250 आउटलेट करेंगे, 800 करोड़ तक पहुँचना है रेवेन्यू, ये हमारा टारगेट इंटरनल, विच विल कम थ्रू अपना स्टोर एक्सपेंशन, सम एक्विजिशन दैट वी माइट डू, एंड जो ब्रांड्स ऑलरेडी एक्वायर किए इसको और एक्सपेंड करना है साथ साथ। Passion, determination, and entrepreneurial spirit have been the driving force behind the brand's success. Kaushik's leadership style is characterized by a focus on empowerment, innovation, and a deep connection with the team. मैं तो पहली बार टीम नहीं बोलता, मैं फैमिली बोल के चलता हूँ, कि सारे घर वाले, मेरे बच्चे सब यहाँ पे, बिकॉज सबसे बुढ़ा आदमी मैं ही हूँ इस कंपनी में। तो देर ऑल माई किड्स हियर एंड दे ट्रीट मी लाइक अ फादर हियर। उतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, पर दैट इज़ द वे दे ट्रीट मी, दे आर मच यंग। But so one thing that I have learned that first there are a few principles that I follow, and I'm very strict about it when it comes to myself and everybody else. One, that I have to have a lot of empathy for my employees. That is one thing lacks in many organizations, I realize, and that empathy that works on my benefit. I treat. The reason I say this because I have come up the ranks. I used to be a waiter 30 years back when I started my career in Maurice Hilton, Delhi. And I became a CEO in the 10th year of my career. So मैंने वो लेवल पे काम किया हुआ, एक मैनेजर लेवल, वेटर, सुपरवाइजर, यू नेम द डेजिग्नेशन, एंड आई वर्कड इन दैट लेवल। समटाइम तो मुझे पता है कि वो आदमी फील कैसे करता है। इट इज़ नॉट ओनली मनी दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, इट इज़ हाउ यू ट्रीट हिम। उसका बॉस कैसा है, उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसका काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है। मनी प्रॉब्लम विल बी द 4th or 5th important item in the list of things that is important to an employee. So I first treat them as any family member. उसको दर्द होता है तो मुझे भी उतना ही दर्द होता है, और मुझे परेशानी तो उतना ही, जैसे पापा डांटते हैं घर पे तो मैं भी उनको वैसे ही डांटता हूँ। आई थिंक दैट रिलेशनशिप वर्क्स फॉर माई बेनिफिट। बिग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स, एंड प्रॉब्ली आई एम नॉट, माई एम्प्लॉयज आर नॉट द हाइएस्ट पेड एम्प्लॉयज, दे आर प्रॉब्ली एवरेजली पेड। तो इसलिए कि पैसे के लिए सब रुके हुए, मैं उनको ग्रोथ बहुत देता हूँ, काम बहुत सिखाता हूँ, काम ग्रोथ बहुत दिलाने की कोशिश करता हूँ कि सबका काफ़ी लोगों में पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं होता है। आई हेल्प देम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड चेंज देयर करियर पाथ अकॉर्डिंगली, टू रियलाइज देयर हिडन पोटेंशियल। जैसे मैंने अपना हिडन पोटेंशियल निकाला, एंटरप्रेन्योर बना, जो मैंने सोचा था बंगाली लड़का बिजनेस तो कर ही नहीं सकता, दैट वाज माई ब्रदर्स स्टेटमेंट कि बंगाली तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो बिजनेस कैसे करेगा। सो दैट इज, so I also realized my hidden talent that I could become an entrepreneur and lead a successful organization. Similarly, I look at all my employees and see what strengths they have, try and identify and give them tools to utilize this, give them the tools and resources required to कि अपना skill use कर पाए. So I think लोग appreciate ये करते हैं, empathy बहुत करता हूँ और ख्याल बहुत रखता हूँ employees का. लोएस्ट एट्रिशन है मेरे कंपनी में, जितने लोग आप देख रहे हैं सारे 8-9 साल पुराने हैं, जब से पहला दिन से आए.
टीम बनाने में मेरे लिए बहुत ईजी रहा क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो लोग ने मुझे पहले काम करता हुआ देखा तो सबको लगा कि भाई कौशिक कुछ कर रहा तो शायद ढंग का करेगा, डुबाएगा नहीं, तो लोग जुड़ गए मेरे साथ बहुत जल्दी, और जुड़ने के बाद उनका भरोसा भी नहीं तोड़ा मैंने. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. In the world of entrepreneurship, the allure of opening a restaurant is undeniable. But with great rewards come significant challenges. तो अगर आप अपने लिए पूछ रहे कि कल को रेस्टोरेंट खोलो तो कितना दिन का पैसा लेके चलना है, ऑनेस्ट आंसर कि 1 साल, बिकॉज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सीजनलिटी बहुत है. अब जैसे श्रावण का टाइम है, बिरयानी बाई किलो नॉनवेज रिसीव होता है तो सेल डाउन हो जाता है. बच्चों का एग्जाम मार्च में आता है, लोग बाहर नहीं जाते, खाना खाने का सेल डाउन हो जाता है. दिवाली दशहरे में लोग खूब स्पेंड करते हैं, न्यू ईयर में खूब स्पेंड करते हैं. तो आपको एक सीज़न पूरा देखना पड़ेगा, बिकॉज आपका हर मंथ में ग्रोथ लाना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द अनसीजनल. जुलाई अगस्त में छुट्टियाँ होती है, लोग सब अपने घर से बाहर चले जाते हैं, शहर से बाहर चले जाते हैं. तो देयर विल बी सीजन वेर यू विल सी बिग पीक्स एंड देयर विल बी सीजन वेर यू विल सी ड्रॉप्स इन योर सेल. सो आपको पूरा सीजन अगर नहीं देखोगे तो आपको अपना एवरेज नहीं निकलेगा महीने का. 1 महीने का सेल देख के अपना पूरा P&L बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा. थैंक यू सो मच इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए. आई होप कौशिक की स्टोरी में आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली हो. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए विच आर द पीसेस यू लाइक द मोस्ट. और ऐसी बहुत सारी और स्टोरीज को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू स्नैक फाइव.